Hey guys, welcome back to the lab. So this is a quick and short video on portable SSD. तो आज हमारे पास हैं दो SSD Sandisk and Samsung T7. चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. तो Samsung T7 is a great looking SSD, got this sleek metallic look going on. But the thing is that the Samsung T7 SSD kinda uses the USB 3.2 जनरेशन 2 मीन्स भी इसकी रीड एंड राइट की कैपेबिलिटीज 1000 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक ही है, वेयर एज जो सैंडिस्क की SSD है इट यूजेस USB 3.2 जनरेशन 2x2, उसका सक्सेसर है ये, एंड विच मीन्स डबल द पावर, लाइक 2000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड एंड राइट स्पीड है. तो मीन्स स्पीड में रीड एंड राइट की स्पीड बात करें तो या सैंडिस्क कम्स आउट ऑन द टॉप, या और सैंडिस्क में 4 टेराबाइट का भी वेरिएंट है. सैमसंग में आपको वो चीज़ नहीं मिलती है. एंड मूविंग टू द इंक्रिप्शन, तो यार दोनों AES 256 बिट इंक्रिप्शन सिस्टम यूज़ करते हैं. इट्स ए गुड इंक्रिप्शन सिस्टम if you want to keep hackers away from your portable hard drive in case you lose it. But yeah, both uses it and safe to have. तो ज़्यादा प्राइस पॉइंट पे भी डिफरेंस नहीं है, दोनों 9000 10,000 के बीच में आ जाती हैं. आई डोंट नो हाउ इट गोज विद द वैल्यू, बट या बोथ आर great SSDs. And if you guys are looking to buy a portable SSD चाहिए कैरी करने के लिए, I will say go with either one of them. If you are looking for a sleek metallic look, yeah, Samsung, yeah, looks great, comes in different colors and variables. But if you are more of a performance guy, go with the Sandisk. That's a given. Alright guys, thank you for joining in today. This was a quick and short videos on portable SSDs. So this is your host Blurryface signing out.